and adorable students. How are you all? So, today I am here for an English class. Today we will be learning a new topic, that is naming words. Have you ever heard about that? No, it's okay. I'll tell you about naming words. Are you ready? So let's get started. Naming words. Everything in this world has a name. Yes, name. You have a name. I have a name. Your mama, papa, dada, dadi, your teacher, your father's friend, everybody has a name. And if you have a pet at home, that must be having a name, right? तो कोई भी चीज जिसका कोई नाम होता है, उस नाम को हम कहते हैं naming words. Alright children, naming words. Name of a person, name of a place, name of an animal or name of a thing. They together make naming words. Yes, they all are naming words. So, I will tell you about person. Person means कोई भी इंसान, कोई भी इंसान, कोई girl, any cricketer, police officer or anybody. They are naming words. Person. Alright? Next. Places. Places. You visit market, zoo or temple. Any place where you visit, that's a place. And that is also a naming word. It is not important that if man has 3 pictures, that means these 3 pictures are only naming words. No. Any place where you visit is a naming word. Next, animals are also naming words. Name of animals or birds are also called naming words. Things, anything, कोई भी चीज, कोई खाने की चीज, कोई पहनने की चीज या कोई भी चीज जो आपको आपके आसपास नजर आती है, राइट? लाइक अभी आप किस पर बैठे हैं? चेयर पे. So that is also a thing. I am sitting on sofa. That's also a thing. So anything around you is also naming word. So name of a person, a place, an animal or thing are called naming words. For example, person like me, my name Sanjana or your name, right? That is person. Thing, anything, chair, table, pen, book, notebook, fan, AC, anything. They count in naming words. Next, animal, a dog, a cat, a parrot, tiger, any animal comes under naming words. And the last is place, where you visit your school, hospital, police station, park, zoo, cinema, shopping mall, anywhere. These are called naming words. Now I think you have learnt about naming words. Now I want to clear one more thing, that we also call naming words nouns. Yes, we also call naming words nouns. We have learned about nouns. Name of a place, person, things and place are called nouns. Now we will discuss types of nouns. So there are 2 types of noun, common noun and proper noun. Common noun and proper noun. So first of all, I am going to tell you what are common nouns and what are proper nouns. Type of a person, place, thing.
type of a person, place, thing is called common noun, like a dog, a person, a girl, vegetables. These type of names are common noun. And specific name of a place, person, thing is called proper noun. Specific name of a person, place and thing is called proper noun. Like a girl is a common noun, but name of that girl, like Meera, is a proper noun. Animal, like a dog, dog is a common noun. But if the dog has a name like Bruno, the Bruno name of the dog is called proper noun. Now let's differentiate, or let's know the difference between a common noun and proper noun with few examples. So let's start with few examples. First example that I have is a ruler. ये ruler है या scale जिसे आप बोलते हो, ये हम अपनी एक्टिविटीज में यूज करते हैं. तो नॉर्मली आप इसे स्केल या रूलर बुलाते हो, लेकिन रूलर या स्केल बहुत ही कॉमन नाम है. हर कोई इसे रूलर या स्केल ही बोलता है. बट अगर आप नोटिस करोगे तो इसके ऊपर इसकी कंपनी का नाम लिखा होता है. जैसे कि द रूलर आई हैव राइट नाउ, द नेम ऑफ द रूलर इज डॉम्स. ये डॉम्स कंपनी का रूलर है. तो रूलर और अ स्केल इज अ कॉमन नाउन. बट अगर मैं कहूं दिस इज डॉम्स स्केल, द डॉम्स स्केल मीन्स डॉम्स क्या है, इसका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि डॉम्स is the specific name of this ruler. Next example I have this pen, a sketch pen. अब हम सभी इसको sketch pen बुलाते हैं. तो sketch pen, what is a sketch pen? हर किसी के पास अलग अलग टाइप के sketch pens होते हैं और हम उनको sketch pen ही बुलाते हैं. बट हर sketch pen जो है वो अलग अलग कंपनी का होता है. तो अभी मैं देखने जा रही हूँ कि मेरा ये sketch pen कौन सी कंपनी का है. इट्स अ DYD कंपनी. सो द नेम, स्पेसिफिक नेम है जो इसके ऊपर दिया गया है स्केच पेन का, वो है DYD स्केच पेन. स्केच पेन इज अ कॉमन नेम, बट अगर मैं इसको बुलाऊंगी DYD स्केच पेन तो ये है इसका प्रॉपर नाउन. नेम, स्पेसिफिक नेम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव दिस क्यूट लिटिल डॉग. दिस क्यूट लिटिल डॉग, आई होप यू लाइक इट. अगर मैं इसको डॉग बुलाऊं, मैं कहूं दिस इज अ डॉग, तो इस डॉग, क्यूट से डॉग को हम अगर डॉग कह के बुला रहे हैं तो डॉग इज अ कॉमन नाउन. डॉग इज अ कॉमन नाउन. अलग अलग तरह के डॉग्स होते हैं, अलग अलग ब्रीड्स के डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, पेट डॉग्स होते हैं. लेकिन जब हम उनको डॉग कहेंगे तो डॉग इज अ कॉमन नाउन. लेकिन जब हम उनका कोई स्पेसिफिक नाम रखेंगे, तो जब हम उस स्पेसिफिक नाम से उसको बुलाएंगे तो हम उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन. जैसे मेरे इस क्यूट से डॉग का नाम है ब्रूनो. तो डॉग, अगर मैं कहूं दिस इज अ डॉग, तो डॉग इज अ कॉमन नाउन, बट ब्रूनो इज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव इज दिस क्यूट लिटिल कैट. दिस इज, आई होप यू लाइक इट. शी इज रियली वेरी क्यूट. हर नेम इज किटी. हर नेम इज किटी. सो व्हेन आई कॉल इट अ कैट, मैंने कहा दिस इज अ कैट, तो कैट इज अ कॉमन नाउन, बट किटी इज अ प्रॉपर नाउन. वाई? क्योंकि किटी इसका स्पेसिफिक नेम है. जब मैंने इस कैट को अपने घर लाया तो मैंने इसका एक स्पेसिफिक नाम रखा. तो कैट तो बहुत सारी हो सकती है, बट मेरी कैट का नाम है किटी. तो मैं, इसका जो नाम है किटी, वो क्या है, प्रॉपर नाउन. इसका नाम क्या है, प्रॉपर नाउन. और अगर मैं इसको कैट बुलाऊंगी तो कैट इज अ कॉमन नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव this cute little girl. This cute little girl. Hi. Hi. What's your name? Sanvi. Yeah, she is Sanvi. जब मैंने कहा she is a girl, तो girl is a common noun. Girl is a common noun. तो but Sanvi is a proper noun, क्योंकि Sanvi इसका specific name है. तो specific name क्या होता है? Specific name is a प्रॉपर नाउन. सो ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे कि इसमें हम कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है. ओके सानवी, इन विच स्कूल डू यू गो? Vidyashri International. टेल एवरीवन, इन विच स्कूल डू यू गो? Vidyashri International School. Okay, so you are a Vidyashriyan. Great. So when I asked her in which school do you go, तो school is a common noun. School is a common noun, but Vidyashri International School is a
proper noun. Yes, because Vidyashri International is the specific name of the school. So that's why Vidyashri, जब हम बुलाएंगे कि विद्या I go to Vidyashri International School, that means Vidyashri International School is the proper noun and school is a common noun. All right, thank you Sanvi for joining us. So I hope with these examples आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा the difference between common noun and proper noun and what is a common noun, what is a proper noun and what are nouns. So through these activities in your house also you can find, आप अपने घर में चीज़ें ढूंढिए और उन चीज़ों को देखकर आप बताइए कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है. इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे आप अपनी मम्मी को मम्मी बुलाते हैं या मम्मा बुलाते हैं, मॉम बुलाते हैं, तो जब हम उनको मॉम या मम्मी बुलाते हैं दैट इज अ कॉमन नाउन. मॉम और मम्मी इज अ कॉमन नाउन. बट अगर आपकी मम्मी का जो नाम है, लाइक इफ योर मदर्स नेम इज ऋतु, तो ऋतु इज अ प्रॉपर नाउन. और हम प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. जब भी कोई प्रॉपर नाउन होगा, जैसे अगर मैं कहूँ इन विच सिटी डू यू लिव, तो सिटी इज अ कॉमन नाउन. बट अगर आप अपनी सिटी का नाम बताएंगे, आई लिव इन रोहतक सिटी, तो रोहतक इज अ प्रॉपर नाउन. और इसी तरह किसी भी एनिमल है, जैसे मैंने आपको अपने पेट एनिमल्स दिखाए और मैंने उनका नाम भी रखा है, तो उनके जो स्पेसिफिक नाम है दे आर प्रॉपर नाउन. लेकिन जब मैंने उनको कॉमनली डॉग या कैट बुलाया तो दे वर कॉमन नाउन्स. तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी. सी यू लेटर. So students, I hope nouns are clear to you. So, do you know there is a game that can really help you understand nouns? And also it can help you to increase your knowledge. Do you know that game? Do you want me to tell you? Okay, so the game is name, place, animal and thing. So now I'll explain you how to play this game. So, to play this game, we need at least 2 members, or since lockdown is going on, you can play with your whole family, okay? Tell your mummy papa to play along with you, okay? So, there are 2 ways to play this game. First, you can write all the letters. How many letters are there? 26. Very good. So, we have to write all the 26 letters on different slips. And then we can place those slips in a bowl. And then we have to mix it. And one of you will randomly pick it. Okay? And then he or she will declare the alphabet. Whatever letter is there, he or she will declare. Then what you have to do? You have to write name, place, animal, thing from the same letter. So suppose the letter is R. So we have to write all the words starting with R. Suppose name, place, animal, thing, and the letter is R. So we will write all the words starting with R. Ruby, Rohtak, rat, rope. So whosoever finishes this game, he or she will start counting till 20 for the other members. And you have to complete it before the countdown. Okay? For every correct answer, you will get 10 marks. And for every similar answer, supposedly I am writing the word rat and the other person has also written rat, so that will be counted mutual, so we'll get only 5 marks. And if a person has written a wrong name or anything that is not acceptable or countable, or a word that doesn't even exist, so we'll give them 0. So now we'll discuss about the second way. Everything is same, we just have to change the first step. Initially we were writing the letters on a slip of paper, but now what we have to do, we have to just count the letters in our head, only inside us, and we cannot speak it aloud. The other person should not hear the letter, okay? And the moment the person says stop, you have to stop and you have to declare the letter. So suppose the letter is M, then we will write all the words starting with M. Meera, Manipur, monkey, mat. So whosoever scores the highest marks wins. So students, I hope you like this game. So now you should really play this game with your parents and family members, and this will really help you boost your knowledge, and it will really make you a very confident person.
So when you'll come back to school, you will come as a confident student. And also you can play Atlas. It will also help you increase your knowledge. So students, I hope you really like this video. We'll meet again in our next grammar class. Till then, goodbye.